द मिस्ट्री ऑफ मोशन। इज एनीथिंग एवर रियली स्टिल? सब कुछ कितना स्टिल लग रहा है ना? तुम चेयर पे बैठे हो, लैपटॉप या फोन तुम्हारे सामने रखा है, रूम भी बिल्कुल शांत है, तो लगता है अब सब कुछ स्टेशनरी है। लेकिन क्या सच में? तुम्हारे नीचे अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है। अर्थ खुद सन के अराउंड ट्रेवल कर रही है, सन भी स्पेस में मूव कर रहा है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर वहां तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स की दुनिया कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। Everything in nature is in motion, from massive astronomical objects to subatomic particles. And what a variety in motion we have in nature! Fitting butterflies, dancing dust particles in a sunbeam, rising and falling of ocean tides and gathering clouds. तो क्या यूनिवर्स में कुछ भी एक्चुअली स्टिल है? मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दैट डिपेंड्स। किस चीज़ पे? व्हाट आर यू कंपेयरिंग टू? एग्जैक्टली, और यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ यह कह देना कि समथिंग इज मूविंग काफ़ी नहीं है। हमें प्रिसाइसली बताना पड़ेगा, वेयर इज इट, हाउ फार हैज़ इट मूव्ड, हाउ फास्ट इज इट मूविंग, और सबसे पहले हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा है। उसका आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है। लेट्स फाइंड आउट। You have learned that when an object moves in a straight line, its motion is called linear motion. It can also be called motion in a straight line. It is the simplest kind of motion. Have you noticed it around you, such as a car moving along a straight stretch of a highway, or a train moving on a straight track, a vertically falling ball, or a children in a swimming pool? Let us take the example of an athlete running on a straight track. To describe the position of the athlete, let us take a starting point as the reference point. पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट। फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। हम इस पॉइंट को 0 मान लेते हैं। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव पोजीशन है और ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव पोजीशन। तो अगर कोई ओरिजिन के राइट में 10 मीटर्स कवर करती है तो उसकी पोजीशन होगी +10 मीटर्स, और अगर वो ओरिजिन के लेफ्ट में 10 मीटर्स खड़ी होगी तो उसकी पोजीशन होगी -10 मीटर्स। नोटिस करो, दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, लेकिन पोजीशन सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो याद रखो, पोजीशन सिंपली टेल्स अस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव टू अ चूजन रेफरेंस पॉइंट। बल्कि कितनी दूर नहीं, किस डायरेक्शन में और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहाँ है। आप कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। टाइम t1 पे क्विन यहाँ है, यानी कि x1 इज इक्वल टू 20 मीटर्स। और टाइम t2 पर क्विन यहाँ है, यानी कि x2 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। तो क्या चेंज हुआ? हर पोजीशन, और जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है वी कॉल इट मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और अगर पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। चलो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। मैं रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर राइट में खड़ी हूं। मेरी पोजीशन क्या है? +10 मीटर, यस। और अगर मैं यहां से 20 मीटर लेफ्ट की ओर मूव करूं, यानी कि 10 + 10 दैट इज 20। तो मैं एग्जैक्टली कहां पहुंचूंगी? और यहीं पर फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देती है, बिकॉज
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज नहीं है। अगर क्विन 20 मीटर वॉक करती है तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी, दैट इज वेयर डिड आई स्टार्ट एंड वेयर डिड आई एंड। और इसी क्वेश्चन से हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, दैट इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम जानते हैं कि पोजीशन क्या होती है। अब इमेजिन करो मैं रेफरेंस पॉइंट से 40 मीटर्स राइट वॉक करती हूँ। क्वीन मूव्स फ्रॉम 0 मीटर टू प्लस 40 मीटर्स और फिर पता नहीं क्यों मैं डिसाइड करती हूँ कि घर वापस जाना चाहिए। सो क्वीन टर्न्स अराउंड एंड वॉक्स बैक। तो मैं वापस एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती हूँ। अब एक सिंपल क्वेश्चन, मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 40 मीटर्स जाने की और 40 मीटर्स आने की। सो माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 80 मीटर्स। लेकिन अब फिजिक्स में तुमसे एक थोड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछती हूँ, वेयर डिड क्वीन एंड अप? Exactly, where she started, that is starting position is equal to final position. So, what is the displacement? I traveled 80 meters, but my displacement is 0. Why? और यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बिगेस्ट डिफरेंस। डिस्टेंस पूरी जर्नी को देखता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक चीज पूछता है, स्टार्ट कहाँ किया था और एंड कहाँ किया। डिस्टेंस टेल्स अस अबाउट द पाथ, डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस अबाउट द चेंज इन पोजीशन। और अगर तुम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो बिना बैक किए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है। सो डिस्प्लेसमेंट डजंट केयर अबाउट द एंटायर जर्नी, एग्जैक्टली इट ओनली केयर्स अबाउट द बिगिनिंग। चलो अब एक रियल फिजिक्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इमेजिन करो हम एक बॉल को पॉइंट ओ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। पहले पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी और फिर सी पर बॉल रुकती है और वापस नीचे आती है और इवेंचुअली ओ पर वापस आती है। एट पॉइंट ए, अब बॉल ए पर है जो ओ से 40 सेंटीमीटर्स ऊपर है। बॉल ने अब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 सेंटीमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट ओ से करंट पोजीशन ए तक। एट पॉइंट बी, अब बॉल बी पर पहुंच गई, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तक बॉल सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अब बॉल नीचे आ रही है, दैट इज एट पॉइंट सी। सपोज बॉल पॉइंट सी पर पहुंचती है तो सी की पोजीशन ओ से 80 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले ओ से बी तक 140 सेंटीमीटर, देन बी से सी तक 80 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। So what is the displacement? So the change in position of the ball is 80 centimeters from O. अब बॉल सीधा C से फाइनल पोजीशन O की तरफ आ जाती है। So बॉल ने टोटल 280 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस पूरा पाथ काउंट करती है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच का नेट चेंज देखती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कभी भी टोटल डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती। So displacement from point O is 0 सेंटीमीटर। अब एक नेक्स्ट केस देखते हैं। इस बार बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो नहीं किया, बॉल एक इंक्लाइन ट्रैक पर रोल कर रही है पॉइंट O से D की तरफ। अब क्वेश्चन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? ट्रैक इंक्लाइंड है यानी हॉरिजॉन्टल नहीं है। बॉल एक ही स्ट्रेट ट्रैक के अलोंग मूव कर रही है। सो यस, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को नेसेसरली हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहिए, पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, एक्चुअल ट्रैक तो इंक्लाइंड है, लेकिन हम ओ को ओरिजिन मानकर उसकी पोजीशन को सिंपल हॉरिजॉन्टल नंबर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलोंग द ट्रैक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें बार बार ट्रैक का एक्चुअल एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ से ए तक बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बॉल ने जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी उतनी ही होगी? आंसर इज यस, बिकॉज द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोटिस करो यहाँ बॉल ने डायरेक्शन चेंज नहीं की,
O से A से B से C और C से D. It keeps moving in the same direction along the same straight path. इसलिए जो डिस्टेंस बॉल एक्चुअली ट्रेवल कर रही है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल हो सकते हैं जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में हो। मोशन दैट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली हैं। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, दैट इज हाउ फास्ट। सपोज मैं और क्यूबिट दोनों 100 मीटर्स ट्रेवल करते हैं। मैं 20 सेकेंड्स में कवर करती हूँ और क्यूबिट 50 सेकेंड्स में। सो हु इज फास्टर? द आंसर इज सिंपल, आई एम फास्टर बिकॉज आई ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। इसी हाउ फास्ट को फिजिक्स में हम स्पीड कहते हैं। Define speed. Speed is defined as the total distance traveled upon total time taken and its SI unit is meter per second. मतलब total कितना distance cover किया divided by total time taken. For example, let's say Quinn travels 100 meter in 20 seconds. What will be the average speed? The average speed will be 100 divided by 20, that is 5 meter per second. So Quinn covers 5 meter every second on an average. What is uniform motion? एक और इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं उसकी मोशन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 5 मीटर एवरी 5 सेकेंड देन it is same distance same time interval, so uniform motion. And what is non uniform motion? अगर एक ऑब्जेक्ट कभी 2 मीटर फिर 5 मीटर फिर 9 मीटर सेम 1 सेकेंड इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ में कार्स बसेस साइकिलिस्ट मोस्टली इसी तरह मूव करते हैं, कभी एक्सलरेट कभी स्लो तो कभी फास्ट, स्पेशली इन ट्रैफिक। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, टू रनर्स ट्रेवल 100 मीटर, रनर ए takes 10 seconds, runner B takes 20 seconds, so who is faster? So, for runner A, the speed is equal to 100 meter divided by 10 second, that is 10 meter per second. And for runner B, the speed is 100 divided by 20, that is 5 meter per second. So obviously runner A is faster because they cover the same distance in less amount of time. So, speed tells us how quickly an object covers distance. And if two objects have the same speed, are they moving in exactly the same way? Not necessarily, because speed tells us how fast, but it doesn't tell us which way, and that's where velocity enters the investigation. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लाइड 4 में हमने स्पीड देखी। स्पीड ने हमें बताया ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव कर रहा है, लेकिन फिजिक्स को एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। मैं बस इतना बोलूंगी कि स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें पता चल गया कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है? इट कुड बी एनी डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, बट स्पीड डजंट टेल अस द डायरेक्शन। दैट इज व्हाई वी नीड वेलोसिटी। और अगर मैं बोलूं कि कार 10 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन जा रही है तो ये है वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। So what is the difference between velocity and speed? Speed tells us how fast and velocity tells us how fast plus which direction. So what is velocity? Average velocity is equal to displacement upon time taken. Speed एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सपोज क्विन 40 मीटर पर ईस्ट ट्रेवल करती है इन 10 सेकेंड। हर डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर्स ईस्ट, सो द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर बाय 10 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट। Now a quick question. There are two cars. Car A is traveling 20 meter per second east. Car B is traveling 20 meter per second west. दोनों की स्पीड सेम है? Yes. दोनों की velocity सेम है? No. Because for car A, velocity is plus 20 meter per second and for car B, velocity is minus 20 meter per second because direction different है. So, speed tells us how fast
Velocity tells us how fast and in which direction. अगर velocity direction पर depend करती है तो अगर कोई object direction change करे क्या उसकी velocity भी change होगी? Exactly. और अब हम एक very interesting case देखने वाले हैं. A ball moving in a circle. Its speed can stay the same while its velocity keep changing. अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन करो. सपोज मैं एक सर्कुलर ट्रैक पे कॉन्टिन्यूसली रन कर रही हूँ और मेरी स्पीड एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकेंड है. मैं हर मोमेंट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही हूँ, तो मेरी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नो, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ स्पीड नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है. डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग. सर्कल के इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. थोड़ा आगे जाओ, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, और थोड़ा आगे फिर डायरेक्शन चेंज, और ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है इवन दो माई स्पीड रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी इफ डायरेक्शन चेंजेस. So at every point the direction of velocity is constantly changes. Take an example. A car moves straight at 20 meter per second and a car moves around a circular track at 20 meter per second. दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन किस केस में वेलोसिटी continuously चेंज होगी? आंसर इज बी, when the car is in circular motion, because direction continuously change हो रही है. That is, velocity changes whenever either speed or direction changes. Remember, speed is magnitude only, velocity is magnitude plus direction. अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. इमेजिन करो सारंग एक 25 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल के एक एंड पर खड़ा है. वो पूल के दूसरे एंड तक स्विम करता है और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है. पूरी जर्नी में लगते हैं 50 सेकेंड्स. अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? पहले डिस्टेंस देखो. 25 मीटर्स जाने के और 25 मीटर्स आने के टाइम इज 50 सेकेंड्स. अब एवरेज वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? पूल के फर्स्ट एंड पर, और फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली वही. तो डिस्प्लेसमेंट, therefore displacement will be 0. So average speed is equal to total distance traveled by time interval, that is 50 meter divided by 50 second is equal to 1 meter per second, and average velocity, since the displacement is 0, average velocity will be 0. So speed total distance देखती है और velocity displacement देखती है. During a family road trip, you drive 200 km north in 3 hours. Afterwards, you drive 200 km south in 2 hours. Find the average speed and average velocity for the entire trip. Average speed. Total distance traveled, that is 200 km plus 200 kilometers. 200. That is 400 km. And total time is 3 plus 2 is equal to 5 hours. So average speed is equal to total distance divided by total time, that is 400 by 5, that is average speed is equal to 80 km per hour. And average velocity, you travel 200 km north and then 200 km south, so you end up exactly where you started. Therefore displacement is equal to 0. Average velocity is equal to displacement upon total time, that is 0 divided by time, that is average velocity is equal to 0. देखा, पूरी ट्रिप में 400 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसलिए एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती, लेकिन तुम एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए, इसलिए योर डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 400 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0. अंडर व्हाट कंडीशन इज द magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? We know that average speed is equal to total distance upon total time, and average velocity is equal to displacement by total time. Therefore, they are equal when distance is equal to displacement. This happens when an object moves along a straight line in one direction without changing direction, that is no turning back. That is when average speed is equal to average velocity. When can the magnitude of average velocity of an object 0 while its average speed is not 0? This happens when displacement is 0, but distance is not is equal to 0. The object travels some distance, but
returns to its starting point. For example, in the previous example, Sarang swims across the pool and comes back, and when a ball goes upward and returns to its starting point, you drive north and then return south to where you started. In all these cases, average velocity is zero, but average speed is not zero. So, when distance is equal to displacement, then speed is not zero. But when displacement is equal to 0 and distance is greater than 0, then velocity is equal to 0. So remember, speed cares about the journey, but velocity cares about where you started and where you ended. इमेजिन करो तुम एक कार में हो। कार इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ड्राइवर एक्सेलरेटर प्रेस करता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट फिजिक्स में सिर्फ ये जानना इनफ नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हुई, हमें ये भी जानना है कि कितनी क्विकली चेंज हुई, और इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, दैट इज A is equal to V minus U by T, where U is equal to initial velocity, V is equal to final velocity, and T is the time interval. The SI unit is meter per second square. Now let's take an example. Suppose कार की velocity 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई और इसी चेंज में 5 सेकंड्स लगे। चेंज इन velocity, that is 20 minus 10 is equal to 10 meter per second, and time is 5 seconds. So A is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। बट एक्सेलरेशन का मतलब स्पीडिंग अप नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर कार ब्रेक लगाती है तो 20, 15, 10, 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बस अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। So acceleration is equal to rate of change of velocity. Velocity increases, acceleration in the direction of velocity. Velocity decreases, acceleration opposite to velocity. Velocity changes direction, acceleration can occur even if speed stays constant. That is, acceleration tells us how quickly velocity changes. So अगर velocity हर second same amount से change हो, then we have something very special, that is constant acceleration, and that's where our equations of motion begin. अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। इमेजिन करो एक बस हाईवे पर ट्रेवल कर रही है। इनिशियली बस की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर एक्सेलरेटर प्रेस करता है। 10 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। सो बस इज स्पीडिंग अप, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप। फिजिक्स में एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो 36 किलोमीटर पर आवर बिकम्स 10 meter per second, and 54 kilometer per hours become 15 meter per second. अब फॉर्मूला लगाते हैं, that is in the previous slide we see that A is equal to V minus U by T, where V is the final velocity, U is the initial velocity, and T is the time interval. So we put V is equal to 15, U is equal to 10, and T is equal to 10 seconds as given in the question. So it becomes 0.5 meter per second square. Since it is positive, so we put the plus sign. So acceleration becomes 0.5 meter per second square in the positive direction. Positive sign tells us acceleration velocity की direction में है, because बस की velocity increase हो रही है। अब ड्राइवर ब्रेक लगाता है।
सो ड्राइवर इमीडिएटली ब्रेक प्रेस करता है तो बस की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से 0 हो जाती है इन जस्ट 5 seconds. Initial velocity was 15 meter per second and final velocity is 0. That is u is equal to 15 meter per second and v is equal to 0 meter per second. So acceleration becomes v minus u by t, that is 0 minus 15 by 5. It becomes minus 3 meter per second square. So acceleration becomes 3 meter per second square in the नेगेटिव डायरेक्शन. अब ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है. बस की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. In the first case, when the driver pressed the accelerator, u is equal to 10 meter per second, v is equal to 15 meter per second, and acceleration is 0.5 meter per second square in the positive direction. But when the driver applies the brake, u is equal to 15 meter per second, v is equal to 0, time is equal to 5 seconds, and acceleration is minus 3 meter per second square in the negative direction. So acceleration can be positive or negative depending on the direction of the velocity change. As we learned earlier, when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground. While coming down, the velocity of the object increases. At different instants, find the magnitude of the average acceleration of the object in every successive interval of a second. Is the average acceleration constant across all intervals? What is the direction of this average acceleration? Yes, the average acceleration is constant and its value is a is equal to 9.8 meter per second square. It remains constant across all the successive 1 second intervals. What is its direction? The object is moving downwards and its velocity is increasing downwards. Therefore, the acceleration is also downward in the direction of motion. This is the acceleration due to gravity denoted by g. The velocities shown at successive seconds are as follows. That is, at 0 seconds, velocity is 0 meter per second. At 1 second, velocity is 9.8 meter per second. At 2 seconds, velocity is 19.6 meter per second. At 3 seconds, velocity is 29.4 meter per second. At 4 seconds, velocity is 39.2 meter per second. So, we will calculate the average acceleration from 0 second to 1 second. Average acceleration is equal to v minus u by t, that is 9.8 minus 0 upon 1 minus 0 is equal to 9.8 meter per second square. Average acceleration from 1 second to 2 second is equal to 19.6 minus 9.8 is equal to 9.8 meter per second square. Average acceleration from 2 seconds to 3 seconds. 29.4 minus 19.6, 3 minus 2 is equal to 9.8 meter per second square. Average acceleration from 3 seconds to 4 seconds.
39.2 minus 29.4 upon 4 minus 3 is equal to 9.8 meter per second square. So, the average acceleration is constant. Velocity changes every second but acceleration remains constant. अगर velocity changes, acceleration exists. But can we actually see motion and acceleration? Yes, we can turn motion into something visual through graphs, and that's where motion starts telling us its story. One useful way of representing motion can be a graphical representation. It provides a visual representation of how position, velocity, and acceleration change with time. Such graphs help us in comparing the motion of two objects, in calculating physical quantities, or in identifying whether the motion is uniform or non-uniform. As you have learnt in mathematics, graph comes in various forms, each suited to different types of data representation. To describe motion, we will use graphs to show dependence of one physical quantity, such as position, velocity, or acceleration, on another quantity, such as time. Let us learn to plot and interpret line graphs of motions. All the graphs that we will discuss in this chapter are for motion in a straight line, in one direction only. In this special case, the distance travelled and magnitude of displacement are equal, and speed and magnitude of velocity are also equal. If position is 0 at time 0, then the position time graph is same as the distance time graph, and the velocity time graph is the same as the speed time graph. Let us plot a graph. Take a sheet of graph paper. What if we could actually watch a graph being born from motion? Now let's make it faster. The graph isn't just showing where the object is, its slope tells us how quickly its position is changing. On the graph paper, draw two lines perpendicular to each other. Their point of intersection is known as the origin O. Mark the horizontal line as OX. It is known as the x-axis. Similarly, mark the vertical line as OY. It is called the y-axis. We need to decide which quantity, time or position to be shown along each axis, and we will show time along the x-axis and position along the y-axis. Determine a suitable scale for each quantity to represent it on the graph paper. We need to choose scales that allow us to represent the data effectively and conveniently while utilizing the available space. This scale can be x is equal to 5 divisions is equal to 1 second, and y-axis is equal to 5 divisions is equal to 20 meters. Use the chosen scale to mark values for time, that is 1 second, 2 second, 3 second, and so on the axis from the origin. Similarly, mark values for position along the y-axis. Begin plotting points on the graph paper to represent each set of time and position values. At time 0 second, the position is also 0. The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. At 1 second, the position of vehicle is at 20 meter. To mark these values, look for the point that represents 1 second on the x-axis. Draw a line parallel to the y-axis at this point. Then draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding to the distance 20 meter on the y-axis. The point where these two lines intersect represent the position 20 meter at time t is equal to 1 second on the graph. Similarly, plot on the graph paper all the points corresponding to position of the vehicle at different instants of time. Once all the points are plotted, connect them to create the position time graph for the vehicle's motion. It is a straight line for the data given in the table. This was an example of plotting a position time graph. The intermediate points represent the possible values for position of a vehicle at intermediate times. They are correct if vehicle is moving with a constant speed. Always remember that a graph is not a route map. It does not show the route, but how the position of the object changes with time with respect to the origin.
For a vehicle starting from rest and speeding up, the data for position and time are given in the table. Now that you know how to plot a graph from the data given for the motion of an object, let us learn how to interpret the graphs. The position time graph represents the motion of object, that is the change in the position with time. You have already plotted two position time graphs. Now, what information can you obtain from these graphs about the motion of the object? What does the shape of the position time graph indicate about the nature of motion? As we can see, a straight position time graph indicates that the object is moving with a constant velocity. On the other hand, a curved position time graph indicates that the velocity is not constant and thus the object is in accelerated motion. In the position time graph, we plotted. Consider a part say AB of the graph. From A, draw a line parallel to the x-axis and another line parallel to the y-axis. Repeat the same for B. Extend the horizontal line from A and a triangle ABC is formed. What do the sides BC and CA of the triangle represent? BC represents the change in the position, that is S2 minus S1, and AC represents the change in time, that is T2 minus T1. By dividing the change in position BC by the change in time AC, you get the average velocity. By extracting values of time T1 and T2 and distance S1 and S2 from the graph, that is S2 is equal to 80 meters, S1 is equal to 40 meters, T2 is equal to 4 seconds and T1 is equal to 2 seconds. The magnitude of average velocity can be calculated by the formula V is equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1. That is V is equal to 20 meter per second. BC by CA gives us the slope. From a position time graph, by finding the positions of the object at two instants of time, you can calculate the average velocity. The slope of the line AB connecting initial position A and final position B. The slope of a line is the steepness of the line. The slope of a graph gives information about the rate of change of the quantity shown on the y-axis with respect to the quantity shown on the x-axis. If we get a steeper line, it means we have greater velocity. If the line is less steep, then you have lower velocity. And if we get a horizontal line, that is we have zero velocity. This follows directly from the explanation that the slope of a line is its steepness and that the slope of the position time graph gives information about the rate of change of position. What does the graph shown in the figure indicate about the nature of motion of the vehicle? The position of the vehicle is 40 meters from the origin and it is not changing with time, that is, it is constant with time. Thus, the vehicle is at rest at 40 meters from the origin. A straight line parallel to the time axis on a position time graph represents a stationary object. In this case, the position time graph is not the distance time graph. The position time graph of two objects A and B are given in the figure. The magnitude of average velocity of which object is higher? We know that by making lines parallel to the axis as shown in the figure. It is found that the displacement of the object B is more than the displacement of the object A for the same time interval. That is, the slope of the line for B is steeper than the slope of the line for A. Thus, the velocity of B is higher than that of A. Let's see how velocity changes with time. For constant motion, we get a straight horizontal line. Faster motion gives us a line higher up on the grid, and the area underneath tells us how far it's traveled.
Velocity time graph of an object in motion represents the change in its velocity with time. In a manner similar to the position time graph, you can plot velocity time graphs. Let us take the example of a car moving in the same direction on a straight stretch of a highway at a steady velocity of 72 km per hour or 20 meter per second. The velocity time graph corresponding to it is as shown. Consider another car that starts moving from rest and its velocity increases with time as shown in the table. The velocity time graph plotted for this is as shown. Consider yet another car moving with a velocity of 15 meters per second. Its velocity decreases with time as shown in the table, and its velocity time graph is as shown. When the velocity of the car is constant, the velocity time graph is a straight line as shown in this figure. It is a straight line parallel to the x-axis and the acceleration is 0. The second velocity time graph indicates that the velocity is increasing with a constant acceleration in the direction of the velocity. The third velocity time graph indicates that the velocity is decreasing with a constant acceleration opposite to the direction of the velocity. Which physical quantities can be obtained from a velocity time graph? Apart from finding the magnitude of velocity of the object at each instant of time, what other physical quantities can be calculated from the velocity time graph? We found that velocity can be determined from the slope of the straight line on the position time graph. What can you find from the slope of the straight line on a velocity time graph? The slope of a line on the velocity time graph gives how fast the velocity is changing with time, that is the acceleration. Now consider the graph shown in the figure. Consider the part of the line AB. Suppose at time t1 corresponding to point A, the velocity is denoted by u, and at time t2 denoted corresponding to point B, the velocity is represented by v. Can you calculate the acceleration from velocity time graph? By dividing the change in velocity bc by change in time ca, we get a is equal to v minus u upon t2 minus t1 is equal to bc by ca. Acceleration then comes out to be 0.5 meter per second square. Can you calculate some other physical quantity from the velocity time graph? Area enclosed by the line on the graph and time axis. Does the area of the shaded part represent some physical quantity? OA is the magnitude of velocity and OC is the time interval. So area of rectangle OABC is equal to OA into OC is equal to velocity into time interval. Since in this case the velocity is constant, it is equal to the average velocity. We can say that the area of rectangle OABC denotes displacement. Substituting the values from the graph, we obtain displacement between 0 second and 6 second is equal to area of OABC, that is equal to 20 meter per second into 6 second is equal to 120 meter. That comes out to be the displacement. This is the displacement of the car from the origin in 6 seconds. You have found that the area enclosed by the velocity time graph and the time axis for a desired time interval is equal to the displacement in that time interval. How can you determine the displacement from the graph given in this figure? Suppose you find the displacement between 10 seconds and 20 seconds, corresponding to which graph points are A and B. We calculate the area between AB and time axis to obtain the displacement of the object which is moving with a constant acceleration. Thus, displacement between 10 second to 20 second is equal to area of rectangle ABDE, ACDE plus area of triangle ABC. This is the displacement of the car between 10 second and 20 second, which comes out to be CD into DE.
CD, that is the area of rectangle ACDE, plus half into BC into AC, which is the area of triangle ABC, which comes out to be 75 meter. We learned that by finding the slope and area from velocity time graph for motion with constant acceleration, we can determine acceleration and displacement respectively. You learned how to represent motion by graphs. अब तक हमने मोशन को डिस्क्राइब किया पोजीशन से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड और वेलोसिटी से, और फिर एक्सेलरेशन से. But can we use all of this to actually predict motion? Yes, welcome to the equations of motion. सपोज एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन है a, और हम उसे t सेकेंड तब तक ऑब्जर्व करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? We will use the equation v is equal to u plus at. ये इक्वेशन हमें बताती है कि टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी. और अगर हमें जानना हो कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वी विल यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वी कम टू द थर्ड इक्वेशन. अगर कभी क्वेश्चन में टाइम दिया ही नहीं हो तब, तो टाइम को एलिमिनेट करके मिलती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. So we will choose the equation according to the what information we have. So we will get three equations, that is v is equal to u plus at, which gives us the velocity, s is equal to ut plus half at square, which gives us the displacement, and v square is equal to u square plus 2ac when the time is not given. The kinematic equations connect u, v, a, t and s. These equations are valid only when acceleration is constant. Three equations, but which one should I use? That's where the real detective work begins. How to choose the right equation. अब हम इक्वेशंस को सिर्फ रटने वाले नहीं हैं. लेट्स फाइंड आउट वेयर दे एक्चुअली कम फ्रॉम. हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है. दैट इज a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस u एंड टाइम विल बी t. So a is equal to v minus u by t. अब बस इक्वेशन को रीअरेंज करो. That is at is equal to v minus u, और u को दूसरी साइड ले जाओ. We get v is equal to u plus at, and there it is, our first equation of motion. Let us take an example. एक कार स्टार्ट होती है with u is equal to 5 meter per second. It accelerates with a is equal to 2 meter per second square, and after t is equal to 4 second, how much will be the final velocity? We will apply the first equation of motion, that is v is equal to u plus at, and we'll put the value for u, a and t, and we'll get v is equal to 13 meter per second. So let's derive the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. So we have the velocity time graph where the initial velocity of the object is not zero. On the vertical axis we have the velocity v, on the horizontal axis we have time t, and we have the starting velocity, that is u, final velocity v, and the sloping line is given the constant acceleration. We will highlight the area under the velocity time graph, and area under vt graph will give us the displacement. So we will take the area of O, A, B, T, and it is given by the area of rectangle OACD plus the area of triangle ABC. So we will apply the formula and we will get the equation as ut plus half t into v minus u. And from the first equation of motion, we know that v minus u is equal to at, and we'll substitute the value and we'll get s is equal to ut plus half at square. So displacement, that is s, comes out to be ut plus half at square, which gives us the second equation of motion. We have a car which starts at velocity u is equal to 5 meter per second, accelerates at 2 meter per second square, and after time is equal to 4 seconds, how much displacement it covers? We'll use the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square, and we'll get s is equal to, by putting the values, we'll get s is equal to 36 meter. So the car travels 36 meter.
The second equation of motion tells us that displacement is equal to initial motion plus effect of acceleration. This equation is valid for straight line motion with constant acceleration. So we found the displacement, but wait, what if we don't have time? Then it becomes necessary to eliminate t. So can we find the relation? So we'll now derive the third equation of motion. That is, we'll eliminate t to get a new relationship between velocity, acceleration and displacement. From the first equation, we get the value of t and we'll substitute that value of t in the second equation of motion and we'll get the equation as this. So this equation might look complicated, but we are not scared of algebra. We'll take the value and we'll get 2as is equal to v square minus u square. So after rearranging, we get v square is equal to u square plus 2as. So this gives us the third equation of motion. So let's take an example. A car that starts with velocity u is equal to 5 meter per second and acceleration 2 meter per second square. It covers displacement 36 meter. So what is the final velocity? We can put the third equation of motion, that is v square minus u square is equal to 2as, and we'll put the value. We get v square is equal to 169. The equation v square is equal to u square plus 2as is useful when time is not given. All three equations apply to straight line motion with constant acceleration. So now we have three equations. हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, बट हियर्स द प्रॉब्लम. क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? इट्स वेरी इजी. पहले फॉर्मूला मत देखो, पहले गिवन इंफॉर्मेशन देखो. u, v, a, t और s में से क्या दिया है, फिर देखो क्या फाइंड करना है. अगर टाइम दिया है और फाइनल वेलोसिटी चाहिए, देन विल अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस a t. और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देन विल अप्लाई s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. And अगर time missing है, so we'll apply v square is equal to u square plus 2ac. So we don't memorize blindly. We read the problem first, then we'll choose the equation. हमने देखा कि अभी तक हमारी कार एक्सेलरेट कर रही थी, बट व्हाट इफ द ड्राइवर हिट्स द ब्रेक, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है. And we'll calculate acceleration by formula a is equal to v minus u by t. Suppose initial velocity 20 meter per second है and final velocity 10 meter per second है, तो acceleration क्या होगी? वो होगी 10 minus 20 by 5. So acceleration comes out to be minus 2 meter per second square. माइनस का मतलब acceleration खत्म नहीं हो गया, it simply tells us the direction. और सबसे important, deceleration के लिए कोई नई इक्वेशन नहीं होती, सेम इक्वेशन, बस acceleration नेगेटिव हो सकता है. अब तक हम मोस्टली एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन स्टडी कर रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था. बट रियल वर्ल्ड में मोशन इतना सिंपल नहीं होता. इमेजिन करो एक कार किसी दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है, या एक फुटबॉल को किक किया, या एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. इन सब में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा. इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन. This motion has two directions. प्लेन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जनरली दो डायरेक्शन कंसीडर करने पड़ते हैं. एक डायरेक्शन है x और दूसरी डायरेक्शन है y. इसीलिए इसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन. अब क्या सर्कुलर मोशन भी मोशन इन अ प्लेन है? एब्सोल्युटली यस. और अब हम एक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग केस स्टडी करेंगे जहां स्पीड कांस्टेंट रहेगी बट वेलोसिटी फिर भी चेंज होती रहेगी. When an object moves in a plane rather than along a single straight line, we describe it as two-dimensional motion. अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन करो. मैं एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही हूँ. मेरी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम है, तो क्या मेरी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? स्पीड कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी भी कांस्टेंट? नो, वेलोसिटी सिर्फ स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है. सर्कल के हर पॉइंट पर मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज चेंजिंग. और जब वेलोसिटी चेंज होती है, so acceleration will be there. So uniform circular motion is constant speed but continuously changing velocity. So what is the big question? If speed is constant, what causes the object to keep changing direction? So we are moving around a circular path at one point.
velocity v is v1. At next point, velocity is v2. So the change in velocity is pointing towards the center. So it will give us that when velocity changes direction, acceleration is produced, and acceleration is produced towards the center. Remember, turning means velocity की डायरेक्शन चेंज हो रही है. सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल का सिंपल मीनिंग है सेंटर की तरफ. सो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल करती है. एग्जैक्टली इसी इनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कॉन्टिन्यूसली टर्न करता रहता है. That is, circular motion always produces changing velocity and centripetal acceleration always points towards the center.